एंड वी आर लाइव। हिंडोल हाय बोलो एक बार, ऑडियो चेक करना है। हेलो 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 हेलो। हाय हाय हाय, सॉरी गाइस फॉर द लाइक प्रॉब्लम जो अभी हुई थी थोड़ी देर पहले। अगर मेरी टीम से कोई भी स्ट्रीम देख रहा है तो प्लीज़ इसका थंबनेल भी लगा दीजिए। एंड 11 पीपल आर वाचिंग, 250 से 11। सच अ फॉल यार, जियो ने मात दे दी, बट इट्स ओके। एंड कोई भी कमेंट्स में सेम लोग आए तो अच्छा 22 हो गए। कोई भी युवराज कमेंट, भाई है, युवराज भाई हमारे रेगुलर हैं, तो या युवराज भाई ने ओके कह दिया, तो यस वी कैन गो अहेड। युवराज इज ऑल्सो मूवी जो डिफेंड की जा सकती है ना, उसके गाने शायद अच्छे थे जो भाई सब। बहुत बढ़िया एल्बम है, युवराज में। सो युवराज का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया था, राइट? एंड ए आर रहमान हैड कंपोज्ड अ ट्रैक फॉर दैट मूवी, एंड ही पिच्ड इट टू सुभाष घई कि सर सुन के देखो कैसा है। एंड सुभाष घई वाज लाइक हाँ ठीक है, ये बेकार गाना है, ये नहीं यूज करते। एंड देन दैट सॉन्ग वन ए आर रहमान दी ऑस्कर, दैट सॉन्ग वाज जय हो, जो सुभाष घई ने रिजेक्ट किया था। नाइस नाइस नाइस, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन गाइस। ऋषभ, स्पॉइलर गाय, प्रथम, युवराज, बाकी भी आपके सहपाठियों को प्लीज बता दीजिए दैट वी आर लाइव। यस। एंड हम अभी कॉफी विद करण के बारे में हिंडोल बाद में कभी बात करें आराम से, हाँ मतलब हाँ, वानी अशुभ ने कुछ सब्जेक्ट है। बहुत खतरनाक चीजें बताई। तो वो हम अलग से रिवील हाँ करेंगे। एंड या कॉफी विद का इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 1000 लाइक्स पे हिंडोल भाई पीछे जाके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ इरेज कर देगा। इस स्ट्रीम पे अगर हो गए तो मैं अभी कर दूंगा, चलो हाँ करते हैं 1000 लाइक्स आ जाओ। हाँ, बट नहीं, दिस वाज अमेजिंग। एंड लाइक गाइस, अब थोड़ी देर लाइक जाते जाते रैप करने का, हम आपका पार्ट लाइक रैप करना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू टॉक, हमें और बताइए व्हाट आर द लाइक, क्या हम लोगों ने नाम फाइनलाइज किया आपके संडे स्ट्रीम्स के लिए? दिशा ही टॉक्स। हाँ वही है, अभी तक एक ही नाम है। See the thing is we want to kind of take our time because as someone who has been stuck with a badly chosen name for 23 years, I know नाइस। important होता है, तो yeah, we're going to take our time and let's see अगर किसी के व्हाट like डज because see हिंडोल मीन? व्हाट डज हिंडोल मीन? हाँ तो पहले तो मैंने आज तक वैभव को करेक्ट नहीं किया बिकॉज लाइक अभी नहीं करते, बट इट्स हिंदोल, प्रोनाउंसिएशन हिंदोल है। वानी मेरे That's को what कह I रही thought. थी। Like I हाँ was so confused. या तो वो है एंड यार बट हिंडोल इज कूलर नो, मतलब ऐसा लगता है एक फैंसी दोस्त है मेरा। हिंडोल तो मतलब ऐसे। हाँ मुझे इसके Indol. बारे में बाद में बात करेंगे, बट हाँ वो प्रोनाउंसिएशन है। एंड इट्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक राग होता है उसके ऊपर है, और हिंदी ओह में स्विंग झूला जो होता है उसको हिंदोल कहते हैं। तो वो है, वो सेकंड नाइस मीनिंग मैं बताता नहीं हूँ लोगों को क्योंकि देन इट लीड्स टू अदर थिंग्स, तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाला ही बताता हूँ। सो इट्स अ रागा इन क्लासिकल म्यूजिक। सो या नाइस 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 नाइस। 1 सेकेंड। एंड Yeah, we हाँ have decided कि 10th episode तक नाम रख देंगे, यस correct? हाँ 10th एपिसोड पे लाइक फाइनल नाम रख देंगे, पर लाइक पूरा गैस एकदम हमने से। आप लोगों को हमारे स्ट्रीम पे नाम रखने के लिए लाइक मुहूर्त निकला है, आज निकाल लो लाइक ऐसे। औरत निकला ठीक है, जा रहा अगर है कुछ इसके चैट बाद में नहीं अच्छा आया तो for sure. हाँ मतलब इफ इट्स लाइक रियली रियली गुड तो हम रख देंगे, इमीडिएटली रख देंगे, तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है अभी। द You know, this इंटरनेट reminds me सेट्स। of हाँ, the guy who plays Roman. I'm forgetting his actual name. हाँ कैरल कल्किन। Yeah, he didn't हाँ keep the name of his second child until like 7 weeks or so, almost. Yeah, two more. अनरिलेटेबल। Sorry. नहीं बट हाँ, तो देखते हैं लाइक आप लोग बताना हाँ कुछ अच्छा सा। द इंटरनेट सेट्स और टाइप कुछ कर सकते हैं, द दिशाहीन सेट्स, सो लाइक ऐसे कुछ लाइक सोच रहा हूँ ऐसे रैंडमली जैम मुझे कर रहे कुछ हैं। भी टॉक्स ही पसंद आया था, किसी ने कुछ भी टॉक्स सजेस्ट किया नहीं था। आई थिंक कुछ भी वाला प्रॉपर्टी किसी कॉमेडियन का है ऑलरेडी, तो अच्छा, उधर नहीं जाते। कुछ भी एंड मेहता। हाँ मुझे नाम नहीं लेना था, बट हाँ नहीं आकाश बट मेहता क्यों, का वो है। ही हाँ इज अ गुड कॉमेडियन, अ वेरी गुड कॉमेडियन। या या हाँ मतलब वही ना, नेवर नो कौन कहाँ से क्या कैंसिल कर दे, तो या इसमें कैंसिल क्यों होंगे, ऐसे थोड़ी डरते हैं हिंडोल। अभी भाई मतलब बुला। कल को आके कोई बोल देगा यार इसको जग्गा जासूस पसंद है, मतलब ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे। कहीं से भी कुछ भी लोग डिडक्शन नहीं निकालते एनीवे। बट
दिशाहीन टॉक्स पे मेरा तो आशीर्वाद है, आप लोग देख हाँ, लीजिए. हाँ. And thank you so much for joining Disha and Hindol. We wish you Thank guys you. all like the best having of luck. And Thank you. Sunday को मस्त सा स्ट्रीम कीजिए. And guys, अगर अब 100 लोग वापस आ गए, so nice of you guys to finally come back. अगर ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, सो दैट बाकी जो 150 लोग हैं उन्हें भी पता चल जाए कि स्ट्रीम चल रहा है. एंड हमारे पेट्रन बन जाइए. आप पेट्रन बनेंगे तो आपको बहुत सारी कूल चीज़ों की एक्सेस मिलती है. अभी 100 से ज़्यादा पेट्रन है. सबसे पहले तो हमारा चैनल चल पाता है उस वजह से. सो हमारा चैनल चलेगा, वी विल गेट लाइक यू ऑन द स्ट्रीम्स, यू विल गेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड बिकम अ गॉडफादर हमारे टॉप टियर पेट्रन्स है. एंड उसके बाद आप मेरे को एक ईमेल भेज दीजिएगा vaibhav@chalchitratalks.com पे, एंड देन आई विल ऐड यू टू ऑल द एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप्स. बट थैंक यू सो मच दिशा. आप भी कुछ हरी लाइट लेके आइए नेक्स्ट टाइम, ऑड वन आउट मत रहिए. एंड हिंडॉल, ये तुम्हारी वो एक ऐसे मतलब एक रिफ्लेक्शन है और इज इट द लाइट बिहाइंड यू? नहीं, लाइट मेरे सामने है, वो पीछे Got it. रिफ्लेक्शन है, तो वो थोड़ा है. एंड थैंक यू वैभव, थैंक यू वानी फॉर इनवाइटिंग अस. काफी अच्छा सुखद रहा ये क्रॉसओवर एपिसोड. एंड Yeah. हम आशा करते हैं कि आप भी कभी हमारी स्ट्रीम पे Yeah. आएंगे. यस बुलाओ. हाँ. So डेफिनेटली. हाँ, आई थिंक या ऑन द 10th एपिसोड जब हम फाइनल नाम फाइनलाइज करेंगे, वीड Oh, वांट are we having a naming ceremony? we'd want you guys to be there as the Baby parents showers. of this channel. Baby shower. God. So, Yeah. This is great, yeah, guys. And thank you so much, Disha. Thank you so much, Hindol. Thank We'll see you soon. And guys, इनका संडे को जरूर स्ट्रीम देखिएगा. And we'll see you. Bye, Hindol. Bye, Disha. Bye. Bye. Bye, Bye. Vaani. Bye. Bye, Vaibhav. Good night. Bye. ये हमारा thumbnail लग गया finally. One second. Okay. Hi, Vaani. How are Guys you? can also change. Sorry. I'm good. I was requesting the moderators to also fix the name. Yeah, V's please. for- वो तब से वानी का OCD चल रहा है. Yeah. तो But I'm good. How are you? yeah, I'm also good. I see Nice you trying people. to fix your cap, फिर वो आगे आ जा रही है, and then you're नहीं, irritated. नहीं, नहीं. Slowly go back to pushing it back. नहीं मतलब ये भी सही है ना, I mean, I Snapchat know I filter. crack bad jokes, but बट रखते कैसे यार? मैं तो ऐसे, मेरे को तो सारी सही लग रही है. no idea. Are you a cap person? I want to be a cap person, but I think my head just looks very weird every time I wear a cap. Okay. You made me conscious. 1 second. Yeah. How did I make you conscious? अब I हम think I थोड़ी have सी. a Yeah. head. Okay. I just हम get अब very conscious. Sorry, shut up. I won't say anything for 5 seconds so that you can actually हाँ, take क्योंकि over. मेरे 1 सेकंड का लैग आ रहा है और लाइक एवरी टाइम आई एम स्पीकिंग. मैं तो यार आगा शाहिद अली की बात करना चाह रहा था. हमने एक टॉपिक डिसाइड किया था वानी आज के स्ट्रीम के लिए. We had decided a lot of topics. Yeah, and like Vaani and I, since we are only doing like streams every 2 weeks now, so we ऐसे plan everything that we are going to talk. And इसलिए जब हिंडोल ने जब कॉफी विद करण की बात करना चालू की, मैंने बोला लाइट काट दो पीछे से. Like I just gave someone the instruction कि yeah. But हाँ यार guys, लग रही है ठंड, मेरे को तो लग रही है मतलब. Trying to make it an immersive session for you so that every time you go back after watching our streams, it Yeah. feels like you've learned. Exactly, that's the whole point. And to make it more immersive, see, you missed the transition, bro. To make it more immersive, Oh, this is cool. Change the moonlight also. dude, you know, a friend gifted me this light on my birthday. Yeah. Such a nice friend, no, though? I Yeah, would always be so thankful to them. Which Yeah. should I would? oh, this is nice. Yeah, मेरे को एक बार मून लैम्प का भी कलर चेंज करना. But this is a nice, thoughtful gift, no? By your friends. बस. Yeah. I'm just saying it's a very thoughtful gift. Yeah, but like अब काम की बात करते हैं. Like there were a lot of things to Please discuss. acknowledge that you have wonderful friends. Yeah. I have great friends. And square typo Okay. squared. Yeah, हाँ वानी books दिखाइए जल्दी.
Okay, these are the books that I've brought with me today. And which one do you want me to start? Okay, first of all, I forgot to tell you about this, but today I was watching this lecture on modern poetry by Professor Langdon Hammerfield. Yale has a lot of free courses online. And so I printed out the script of the entire lecture, and it's absolutely amazing. I mean, Nice. it's really nice. Beach mein he talks about modern poetry and how, modern poets look at art and language, and it's Nice. absolutely amazing. So would you recommend me to take the printouts or like watch the thing? You can watch it also. I took out the printouts because I realized that my note-taking skills are very slow. मेरे को So लिंक भेजो ना इसका. I will send it to you immediately after the stream. Nice, 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 nice. And yeah, May I also ask, you've seen Midnight in Paris, right? yeah. So it's like literally the 1920s, na? And so us time pe a lot of a lot of American poets from the metropolis, urban areas moved to Paris, right? So उसमें बहुत सारे आपके modern poets भी थे. And Midnight in Paris is essentially about that era because Fitzgerald and Hemingway had moved to Paris. So if you read Hemingway ka this book A Movable Feast, it's about that time in Paris, and it's sort of like an autobiography of sorts, Got it. where Got he it. talks about all these authors he met, and modern poets also, like तो फिर बहुत ज़्यादा आएगा. So he talks about this concept how everyone was moving to metropolis like London, New York, Paris. That was where everyone was jamming. And imagine like meeting all these artists in the same city because everyone has moved, and because everyone has left their homes and has moved to one spot, everyone is sort of disconnected from what bound them to their homeland, their homes, their languages, etc., and everyone is creating something new. So it's Nice, nice. such an interesting concept because language all of a sudden no longer exists. I mean, language does, Yeah, but it's just everyone is on the same plate. nice. A very- And ये which YouTube channel is the one जो से आपने ये discover I'll किया? just, it's Yale, it's Yale courses, I think. I'll have to check my history. Just give me a second. I'll give you the the course name is English 310. Yeah, Ing-L 310. I'll share the link also. I'm so excited about it. I'm sorry. Nice, 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 nice. It's called Modern Poetry with Langdon Hammer, and the YouTube channel is Yale Courses. I am assuming मेरे पास आ गया होगा but नहीं आया. ठीक है, होता है, दोस्त नहीं भेजते कभी. I'm होता है. sending the entire lecture series to you. And you Yeah. know, the professor is so nice. I was like, अगर ऐसे professors होते, why would we not want to study more? Yeah. Yeah. Because But like he's that's the yeah. because he'll just crack open his concept, and even if he's reading it out, he'll tell you with such essay. No, now you're laughing. See, this worked, and it's like so nice. You're like, oh, how sweet. Can I just Nice. read every book you've ordered? And I tried to see the books that he had recommended in this course, and I thought I'll just order it and then study साथ में. And that book was like 55,000 rupees, and I was like, what is this source? क्या पढ़ेंगे like? But yeah, that Nice. happened. बट लाइक मैं भी ये चीज़ नोटिस की है कि ये जो प्रोफेसर्स वाली चीज़ कह रहे हो बट लाइक द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. Yeah. एवरीथिंग यू जस्ट नीड क्यूरियोसिटी. और मैंने ये जो बिकॉज लाइक आई वाज टेलिंग यू लेटली, और मैंने जो अभी रेकोज एंड थॉट्स भी चालू किए वहाँ पे भी मैं इसके बारे में एक एपिसोड बनाऊंगा. लेटली आई हैव रियली बिकम ऑब्सेस्ड विद द लाइक idea of addiction and how addiction works. इसके बहुत सारे रूट्स हैं, कॉजेज हैं, मतलब कुछ मेरे बिहेवियरल हैबिट्स हैं जो मेरे को ट्रैक डाउन करनी है. लाइक कि मैं कोई चीज़ करता हूँ, लाइक सीइंग द आर्क ऑफ केंडल रॉय सो क्लोजली. why does he fuck up so much, like what is he addicted to, and seeing people around you, seeing so many movies on addiction, and the worst of them all being addicted to your phone, जो मेरा मतलब like बहुत रियल हो जाता है कभी कभी. Not just phone, internet और devices. तो I discovered this guy, और ना उन्होंने दो चीज़ें बोली थी. मैंने जो आपको लेक्चर भेजा था,
there are two types of addiction, substance addiction and behavioral addiction. एंड पहले के ज़माने में क्या होता था कि एडिक्शन को लोग बोलते थे कि ये डिजीज़ होती है. देन दिस गाय कम्स एंड लाइक ही टॉक्स अबाउट कि बट इज इट अ डिजीज़, क्योंकि उन्हें लगा कि यार इसके अराउंड जो पूरा का पूरा वो है, लाइक लेट्स नॉर्मलाइज इट, लेट्स कॉल इट अ डिजीज़, बट वो उल्टा वर्क करने लग गई. बिकॉज बहुत सही पॉइंट था उनका कि आप किसी को डिजीज़ बोल देते हो तो आपसे पूरी की पूरी वो चली जाती है ओनरशिप, because then you are a patient, then you want the doctor to tell you what to do. The idea of addiction is if you are addicted to something, you have to take the ownership, you will have to solve it, because the moment you start seeing it as a disease, that like you are ill if you are addicted, or if then you're relying on other people to help you with your addiction, but the overall thing is you need to help yourself with the addiction. तो उस बंदे ने पूरे लेक्चर में MRIs दिखाए हैं ब्रेन के कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो रहा है, एंड द वे ही इज ऑब्सेस्ड विद ब्रेन, ही वॉज इन लव विद द आइडिया ऑफ ब्रेन, एंड वो ऐसे एक्साइट हो रहा था बच्चे के जैसे कि ये वाला पार्ट इतना अच्छा है, ये वाला पार्ट इतना अच्छा है. सो एडिक्शन लेक्चर मैंने 2 वर्ड्स टाइप किए थे और फिर मेरे को ये मिला था, एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स आई हैव वॉच्ड. इट्स अ 1 hour लॉन्ग लेक्चर. आई कैन ऑल्सो टेल यू द नेम, मैंने आपको शायद ग्रुप में भी भेजा था. द एग्जैक्ट नेम मैंने आपको कब भेजा था, हाँ. सो साइंस ऑफ एडिक्शन, इट्स कॉल्ड साइंस ऑफ एडिक्शन, द न्यूरोसाइंस ऑफ एडिक्शन बाय मार्क लुइस. एंड one of the things you'll also realize is if you'll read Tribe of Mentors के और chapters ना, there are a lot of books recommended in the realm of addiction. कि the memoirs of the addicts, the मतलब ऐसे कि मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने नोशन पे भी लिखा था इनके बारे में. Now the guy Mark Lewis, people say it's a miracle that he's alive because he was this big an addict. एंड इनकी जो स्टोरी है इन्होंने जो अपनी किताब में लिखी थी, विच ऑल्सो डिड लाइक रियली रियली गुड स्टफ, लाइक बेस्ट सेलिंग बुक वगैरह है, तो इन्होंने उसके बारे में अपना सब्सटेंस एडिक्शन के बारे में लिखा था. इनकी बेसिकली पूरी ये स्टडी है कि सब्सटेंस एडिक्शन में क्या होता है कि आपने मैथ ट्राई कराया किसी को कोक ट्राई कराया, किसी को हेरोइन ट्राई कराया, बट इनकी फटके इनको फटके तब मिले जब इन्होंने देखा कि eating disorder and internet addiction may be same parts of your आपके बेसिकली वो साइनेप्सिस से उन्होंने कंपेयर करके दिखाया कि when you get totally addicted to something तो आपकी थिंकिंग कम हो जाती है, मतलब साइनेप्सिस फॉर्म नहीं होते एंड लाइक ऑल दोस थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. बट ही स्टार्ट्स विद दिस कि अगर ब्रेन डिफॉर्म हो गई आर यू फक्ड फॉर एवर. बट देन ही सेज कि ब्रेन कैन नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, बट ब्रेन कैन कम बैक टू लाइक उस जोन की शेप में वापस आ सकती है, विच इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. आपको मतलब ब्रेन कभी भी सेम शेप में वापस नहीं जाएगी. मतलब इफ आई मे लाइक किंस्तुगी टाइप इसका वो मान लो लाइक एग्जांपल कि इट विल गो बैक टू द सेम शेप बट लाइक विद ऑल दी विजडम पहले की जो अब नहीं थी. सो एक मैंने लाइक किताब का नाम पढ़ा था भी, आई लव द नेम, इन द रेल्म ऑफ हंग्री घोस्ट क्लोज एनकाउंटर्स विद एडिक्शन. ये डॉक्टर गैबरमेट की एक किताब है जो ट्राइब ऑफ मेंटर्स में भी इनका एक चैप्टर है. मैंने आपको इनका एक लिंक भेजा था कि हाउ चाइल्डहुड ट्रॉमा इज लिंक्ड टू एडिक्शन. बेसिकली इफ यू सी एन एडिक्ट और आप उनको जाके बोलो कि अगर कोई लाइक स्मोक करता है और आपने उनको बोलो कि स्मोक करना छोड़ दो, इट्स द वर्स्ट वे टू आस्क समवन टू स्टॉप एडिक्शन. सो ये जो डॉक्टर गेबरमेट है, अगर आप टिम फेरिस के यूट्यूब पे चैनल पे जाओगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो, इट हैज़ 4 million. उनकी जो डिस्कशन है वेयर ही टॉक्स अबाउट ट्रॉमा एंड लाइक इट्स इम्पैक्ट ऑन, और उन्होंने बताया ट्रॉमा की ना लोगों की 95% लोगों की डेफिनेशन गलत होती है, जो उस वीडियो में आपने देखा होगा, बिकॉज ट्रॉमा इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रोमैटिक. एंड इट वॉज सच अ फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी. एंड ये जो है मार्क लुइस इनकी किताब है मेमोयर्स ऑफ एन एडिक्टेड ब्रेन. आई लव्ड इट कि द ब्रेन के मेमोयर्स या एंड तो ये जो मेरे को ऐसे दो लगा अभी तो यार लाइक आई एम लाइक रीडिंग 3 Body Problem which is really nice. I'm really digging it. Powerful. The Whale Suit, The Whale Suite, right? Yeah. The Whale Suite.
Walt Disney, and and Tribe of Mentors. These are the 5 books I'm reading right now. I think one of the things that has really changed how I go about my day is the fact that the first thing I do when I start working, or the last thing that I do before I start working is I read a chapter of Tribe of Mentors. Nice. And it just shapes the way how I go about my day. It's helping, no? मतलब बहुत change होता है ना? It is. Today I read the quotes that changed me. And I thought कि मैं इसके बाद एक और chapter पढ़ूंगी, but there was this quote, what you seek is seeking you. And it's such a simple thing. And आज तक I'd always neglected this quote by Rumi. And then today I was like, okay. Yeah, it hits you different on certain days. Yeah, मतलब ऐसे काफी secret type वाली line लिखती है कि the secret वाली, but like What you seek is seeking you. But then you realize I think secret doesn't work. It's more like when you kind of make yourself clear, like this is what I want. And because I've read Secret, I know they ask you to be very clear about what you want. You automatically start working in that direction. मुझे ये चाहिए, manifestation. these are the things. Yeah, you manifest it because you start working towards it. Yeah. बट नहीं यार, मेरे को लगता है कि आप भी मेरे को बता रहे थे लाइक व्हेन वी वर चैटिंग अबाउट इट कि दिस इज अ टॉपिक यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन, लाइक व्हाट इंटरेस्ट्स यू अबाउट द आइडिया ऑफ एडिक्शन? I think because I have always noticed this thing every time I'm trying to run away from something. Um, I won't say I get addicted, but then I get obsessed with certain things. And then when I'm in a good space, there's no obsession. But whenever I'm not, there is Are you somewhat. talking about overthinking? No, I'm talking about K-dramas, watching them back to back. No, I'm just kidding. Nice. What and But- like discovering, sorry. Yeah. What were you going to say? नहीं. Discovering what, Vaibhav? Discovering what? नहीं. But coming back to addiction. Yeah, I also think like the video that you sent of childhood trauma, that was very interesting because I think उस video में आधे points थे where I was like, oh, this is what I do, oh, this is what I do, this is what I've been doing. Yeah. And I think that will be true for most of the people who are in the chat Yeah, right yeah, now. yeah, And yeah, yeah. I mean, I don't know about you. नहीं सबके लिए होता है ब्रो, मतलब आपको इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट विजडम. और मेरे को इतना अच्छा लगता है यार, यू ब्रिंग इन साइंस एनीवेयर एंड आई विल बाय इट. लाइक क्या मेरे को साइंस एंड लाइक नॉट द बोरिंग साइंस, आप इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ. बोरिंग साइंस मतलब यार मेरे को समझ आ गया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, बट लाइक अगर तुम मेरे को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर तुम डेंसिटी बढ़ाओगे तो ये होगा, देन मेरे को नहीं आएगा. So that is why मार्क लुइस का आपको लेक्चर देखना बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, बिकॉज ही इज नॉट अ गुड लेक्चरर. He still gives a bang on lecture क्योंकि he's so obsessed with it. And you know बंदे ने ब्रेन के बारे में इतनी स्टडी करी है. True. तो yeah. Right. But like it's interesting, coffee with Karan से हम yeah. I wouldn't want to go back to coffee with Karan, so I'll just. Yeah. नहीं, but like there were other things. You know what? Childhood trauma also, it made me question because we're reading The Whale Suite, and in case you notice, a lot of things that Aga Shahid Ali talks about, it actually stems from his childhood. It is actually heavily, and it's true for most of the authors, I think. It stems a lot from their backgrounds, ethnicity, and so on. And sometimes I think childhood traumas actually, so all these traumas that we were talking about, they shape the way you write also. And I think that is what creates other problem that we have, the tragic artist or whatever, where people believe that you need to have some tragedy happen to you in order to write or in order Yeah. to make good art. What do Yeah. you think about that? You know, Rockstar में भी वो line है कि he मम्मा comes भी like जिंदा है, ये है, ये भी बहन भी ठीक है. तो कुछ टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है. टूटा दिल. But yeah, Yeah. what do you think of that? नहीं यार, I don't believe in it at all. Because again, like मैं बहुत different school of thought से आता हूँ. I have always liked happy artists, not necessarily like
but like the Linklaters or the Bradburys were like कि they just loved making art for this. उनको मतलब ही नहीं. और अभी मैंने एक यूट्यूबर डिस्कवर किया है जिसके बारे में we'll have a proper call, you, me and Saurabh. So like some people are just like so obsessed with it, dude. So मेरे को उस चीज़ का मतलब it's a waste of time, like कि मतलब कभी कभी वो आपको मेरे को लगता है कि events really like shape you up, but you cannot be dependent on it. True. क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग की एक डॉक्यूमेंट्री थी एक टाइम पे हॉटस्टार पे, इट्स कॉल्ड स्पीलबर्ग. तो लोग उसको बोलते थे क्या तू बच्चे वाली पिक्चरें बनाता है, ईटी बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. फिर उसने बनाई सेविंग प्राइवेट रायन, और तब उसकी लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड थी वगैरह, बट उसकी लाइफ में तब तक इवेंट्स हो गए थे. उसने अपने 40s में बनाई थी. एंड आई एम इन नो रश to make stuff that I don't relate to right now or don't understand right now. I can't make a war movie right now. I don't like, I can like get into it, but मेरी अभी fascinations बहुत clear है और वो धीरे धीरे open up हो रही हैं. I like जैसे roots जा रही हैं, जैसे चाहे अभी poetry में मैं कुछ like मेरे को समझ आ रहा है the kind of poetry I don't like and the kind of poetry I like. और see, eventually it boils down to will you make that Google search. क्योंकि आई वॉज लाइक रियली वॉन्टिंग कि मेरे को रिसर्च करनी है एडिक्शन के बारे में, एंड आई जस्ट लाइक गूगल सर्च एडिक्शन लेक्चर एंड देन आई डिस्कवर्ड समथिंग. सो इवेंचुअली मेरे को लगता है इट बॉइल्स डाउन टू आर यू जस्ट क्यूरियस इनफ टू मेक दैट गूगल सर्च एंड देन लेट इट डू द आगे का थिंग. जैसे आप प्रिंट आउट ले लेते हो, ये कर लेते हो, हर जने का वही है, बस वहां तक पहुंचना है. द होल गेम इज दैट. और जो ऐसी कोई ना कोई चीज हो जो आपको इतना आप जिसको लेके पैशनेट हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट दीज थिंग्स. सो देन इट डजंट मैटर if you're happy or if you're sad. The right word is obsessed, because when someone gets like sad na, they become obsessed, right? But you can also be happy obsessed. आप ऐसे क्यों देख रहे हो वानी? I was trying to sad obsessed and happy obsessed, and then I realized, oh, okay. This actually reminds me this other book that I got. Yeah. I was very excited. The first thing that I checked in this book was for this. So I got this book T.S. Eliot की. I don't know why, dude. उसकी इतनी पतली किताब was worth like 1,300 rupees, and I was like, ये नहीं खरीद ली मैं. Sorry, I'm going to wait Amazon पे जब discount में मिलेगी. But there was this essay, Tradition and the Individual Talent, and I was reading Mannan Kapoor's biography on Aga Shahid Ali, and उसमें लिखा है that he was heavily influenced by this essay. And so Aga Shahid Ali used to write personal experience के साथ, right? And which we all of us do. But what T.S. Eliot says, there are two kinds of poets, mature poets and immature poets. What immature poets do is they write from personal experience. Now, writing from personal experience is not bad. But what mature poets do differently is they are able to detach themselves from the situation and look at it and then create art. Create Nice. art that allows them to just detach from the situation instead of just obsessing over the situation. And I thought, oh, that's amazing. That's a wonderful advice. And I Nice. think that's where you come in, which is what is a healthy obsession and an unhealthy obsession that will just drive you crazy. ये जो आपने चीज बताई कि डिटैचिंग योरसेल्फ, इसके बारे में इन्होंने कहीं लिखा है क्या? ये अच्छा मनन कपूर वाली किताब में? Give you, yeah, I've actually underlined the exact. That's why I like sticky notes always help. Yeah, that's the So it next. says, what Eliot meant by, okay, I'll give you the exact line. Poetry isn't a turning loose of emotion for mature poets, okay? But an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. What Eliot meant by impersonal wasn't that poetry shouldn't come from personal experiences, but that a mature poet should separate the self, the one who suffers, from the mind of the poet that creates. These ideas practically changed Shahid's outlook and so on. Wow. So ये प्लीज मेरे को इसकी इमेज भेजना वानी. I will send it to you. And क्योंकि you know, this also reminds me. I'm so sorry, I'm cutting you off. नहीं वो लैग आ रहा है तो मेरे को पता नहीं चल रहा था. आप बताओ.
I also, in this essay that I read, not essay, that the lecture I saw today, usme he also talks about the responsibility of a poet, and he says, when a poet is creating poetry, he's just not creating poetry, but he's also creating the personality of a poet. And then he goes on to compare different poets, and you see, oh, this poet also wrote the same like level of poetry, perhaps even better, but the difference in the demeanor is so evident, and that's how they've shaped the way people perceive their poetry. I was like, oh, I Nice. never noticed that, but that's actually something. Like, so every time, say, Sanjay Leela Bhansali is creating a movie, he's also creating an image of what Sanjay Leela Bhansali is in everyone else's mind. या और जो आपने जो टी एस एलियट वाली बात बताई थी, जो उन्होंने आगा शायद अली का जिन्होंने पर्सपेक्टिव चेंज किया था, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब मैं वहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ लिखा है, बट लाइक 4 or 5 years बैक, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ सोफिया कपोला एंड आई हैड रिटन फॉर इंडिया इंडिपेंडेंट फिल्म्स एक ऐसे ब्लॉग लिखा था, वेयर आई थिंक आपको तो मैंने बहुत बार बताया होगा इसके बारे में कि मेमोरीज वाला जो, so there are two kinds of memories, internal memories and external memories. Internal memories is everything that happens to you, your events, your traumas and everything. External memories are, they come from like me talking to Vaani, me reading a book, me watching Succession. So, and good stuff happens when you have the right mix of internal plus external memories. तो और आपको उनको blend करना आना चाहिए. और एज अ क्रिएटर आई लव डूइंग दैट. मतलब ब्रैडबेरी भी क्या ही करता था, उसको पता है कि मेरे को एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखानी है, बट लाइक व्हाट इफ मैं बच्चे की कहानी मार्स पे दिखा दूँ. सो उसने अपने टाइम पे लाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पढ़ा और उसको था कि ओके लाइक आई हैव टू डू दिस, सो ही फाउंड लाइक हिज इंस्पिरेशंस देयर. सो द होल आइडिया इज कि द राइट मिक्स ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, वेयर यू आर ऑल, मतलब हर जगह से जो आपको मिल रहे हैं. क्योंकि अगर सिर्फ इंटरनल हो, डू यू थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग? आई थिंक बाय इंटरनल मेमोरीज यू कैन हैव वन गुड स्टोरी पर लाइक 5 years, per 1 year. I think that gets very self-indulgent also. Yeah, it gets self-indulgent also. And you perhaps might end up creating great work, but I don't think you're pushing the boundary for yourself. Yeah. वो बहुत मेरे को लगता है कि ज़रूरी होता है. बट लाइक हाउ डू यू थिंक लाइक इज एज अ पर्सन, लाइक एज अ क्रिएटर, लाइक आपको क्या लगता है कि where does that, like, are you able to draw that balance when you're writing something? Is it coming more from your like experiences, and like how is the mix of the internal plus external? I think I've started doing this now, where I take the first draft, then I just let it be, and then I come back to it a few days later, and then I judge myself as much as I want to. But then it allows me to look at it from a third person's perspective and actually see if it's worth it, if it's worth Nice. working on, if it's what I like. Because then I'm able to detach myself from the situation. Because Nice. I think every first draft is good enough, but then sometimes we are just so much in emotion that we forget when we draw ourselves away from the point. Nice. Very nice. I just realized we are not like looking at the chat at all. 120 people are watching. Tayyab is also there. Hindol is also there. Hindol बैठ के दिख रहा होगा coffee with Karan, but everything is okay. But where is coffee with Karan? Is there anything interesting happening in the chat? Hindol had said +1 on Poet's Image Mind. It also applies to Spielberg, as Vaibhav mentioned, as there are themes close to him. I keep on showing up in Diverse his book. variants, lonely childhood, nostalgia. Nice. Someone has said Succession के season 2 पर हूँ अभी. I hope the hype for season 3 is real. It's very real. It's I mean, very real. if I could, I mean, I kind of hate how season 4 is coming next year and not on Christmas. Yeah. Yeah, man. But I think like 12 बज गए ब्रो, सोते भी है. हमने इस बार से एक टाइम डिसाइड किया हुआ था, याद है आपको? Yeah, we had said 1.5 hours. Yeah.
But Hindol is now asking all the intellectual questions. How do you stay invested in your creation if it is not personal to you in some extent? Bro, तू अभी topic मत change करो. I watch Coffee with Karan, and then हाँ. when I find inspiration, I come back and then हाँ. और फिर वानी अपने first draft में changes करती है. I had a very bad joke coming, but sorry. Yeah. But end करें वानी stream? Oh, do you want to read the Yeah. read one poem before you leave? The one Yeah, that yeah, you read. please. मैं आपको बताता हूँ. आज 2-4 पढ़ी थी मैंने. नहीं, 2-4 से ज़्यादा ही पढ़ी थी. मैंने एक पढ़ी थी Her Dream Within a Dream Within a Dream. I think this was a part of. Did you like it? Have you come around to reading an interview with Red Riding Hood now? No longer little. Yeah. मैंने वो पूरा पढ़ लिया था ना.